Good morning, dear student. This is your teacher Randeep Kaur from Government High School Mandigam, and today, class 9 students, our topic is motion. Okay, so this is our first lesson of physics as we have completed chemistry. So this is our first lesson of physics, that is motion. So let's get started. What is a physical quantity? A physical quantity is a physical property of a phenomenon, a body, or a substance that can be quantified by measurement. A physical quantity is classified into two ways, scalar and vector quantity. See, जो फिजिकली हम जिस चीज़ का मेजरमेंट कर सकते हैं उस चीज़ को बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी. ठीक है, सो ये क्वांटिफाई हो सकती है, इसको हम मेजर कर सकते हैं, इसीलिए बोलते हैं इसको फिजिकल क्वांटिटी. फॉर एग्जांपल जो भी चीज़ नंबर्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, हियर यू कैन see there is another definition of this. A physical quantity is any physical property that can be expressed in numbers. For example, time is a physical quantity as it can be expressed in numbers. But anger, अगर आप देखो गुस्सा, it is not a physical quantity because it is not expressed in numbers. So आपको सिर्फ इतना याद रखना है, anything which is expressed in numbers that is a physical quantity. ठीक है, so physical quantity के बाद there are physical quantity is of two types. The first is scalar quantity and the second is vector quantity. So let's get started with the scalar quantity. Scalar quantity. Scalar quantity, it obeys algebraic laws of addition. यानी कि आप इसको सीधा प्लस कर सकते हैं. सो इट ओबेज एल्जेब्रिक लॉज ऑफ एडिशन. इट जनरली हैज़ मैग्नीट्यूड ओनली. सो स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है. फॉर एग्जांपल मास, अगर हमने किसी चीज़ का मास निकालना है तो हम बोलते हैं इसका आना चाहिए सिर्फ केजी में. तो इसका सिर्फ एक ही चीज़ है, वी ओनली नो द मैटर. ठीक है, इसमें कितना मैटर है, हमने मैटर इन आवर सराउंडिंग्स पढ़ा है. सो जो मैटर है इसमें वो कितना है, इट इज़ ओनली दैट मच. ओके, सो लेंथ, स्पीड, टाइम, टेम्परेचर, प्रेशर, एनर्जी, वर्क, इलेक्ट्रिक करंट, पावर, ये सारे हैं स्केलर क्वांटिटी जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, उसमें कितना मैटर है और उसने कितनी स्पेस ऑक्यूपाई की है, बट देर इज नो डायरेक्शन. ठीक है, सो दैट क्वांटिटी इज नोन एज स्केलर क्वांटिटी एंड हियर आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ स्केलर क्वांटिटीज. ओके, देन विल मूव ऑन टू scalar quantity again. If a physical quantity can be completely described only by its magnitude, then it is called scalar quantity. One thing you will note, जो भी हम यहाँ पे definition है, that you will note on your notebooks. Okay, so if a physical quantity can be completely described only by its magnitude, then it's known as scalar quantity. To measure the mass of an object, we only have to know how much matter is present in the object. यानी कि अगर ये हमारे पास वेट है 10 kg, तो हमें सिर्फ इतना पता करना है कि इसका वेट कितना है. ओके, therefore mass of an object is a physical quantity that only requires magnitude to be expressed. Therefore we say that mass is a scalar quantity. Okay, so mass is a scalar quantity. तो scalar quantity को हम simple arithmetic means के साथ ऐड कर सकते हैं, एज ऑफ मैंने आपको बोला था. ठीक है, देन द नेक्स्ट इज वेक्टर क्वांटिटीज. Vector quantities are a bit different from the scalar quantities as they have magnitude, but they also have one thing, that is direction. ठीक है, there are some physical quantities that cannot be completely described only by their magnitudes. तो हम इनको सिर्फ और सिर्फ magnitude से describe नहीं कर सकते. These physical quantities require direction also. So what is required along with the magnitude? That is the direction. For example, अगर हम एक force consider करते हैं तो हम करते हैं कि कितनी magnitude की force लगाई. For example, ये हमारे पास एक डंकी है और उसको एक इंसान खींच रहा है, तो उससे वो फोर्स लगा रहा है एंड वो कितनी मैग्नीट्यूड की फोर्स थी वो हमें पता होनी चाहिए, बट वो फोर्स किस डायरेक्शन में लगा रहा है दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. सी, अगर ये इस डायरेक्शन में लगाएगा तो ये इस डायरेक्शन में जाएगा, और ये अगर इस डायरेक्शन में लगाएगा तो इट विल गो ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. सो it is important in vector quantities to mention about the directions. That is therefore to describe a force we require both magnitude and direction. This type of physical quantity is called vector quantity. For example, हमारे पास velocity है, वो सारा जो भी चीज़ें हैं, displacement है, हमें हर एक चीज़ की direction चाहिए होती है along with the magnitude, and that quantity, physical quantity which has magnitude as well as direction, that is known as vector quantity. Got it?
So we have two types of physical quantities. I'm repeating this. One is scalar quantity, another is vector quantity. Now we'll move on to the frame of reference or the reference point. So this is very important to know in motion, or before starting motion, what is basically the frame of reference. See, in order to describe the state or rest or motion of a body, the position of body is compared with its surroundings. See, Whenever हम कोई भी बॉडी मूव करती है तो हम देखते हैं कि वो रेस्ट में है या मोशन में है, किस बेसिस पे कि वो उसकी सराउंडिंग्स कैसी हैं. फॉर एग्जांपल एक ट्रेन चल रही है, ट्रेन इज़ मूविंग और उसके अंदर पैसेंजर्स बैठे हैं. तो ये दो को पैसेंजर्स हैं, जो दो को पैसेंजर्स हैं वो रेस्ट में है बट द ट्रेन इज़ मूविंग. तो अब जो बाहर खड़ा है स्टेशन पे बंदा, उसको लग रहा है ही इज़ मूविंग, बट जो दूसरा पैसेंजर है उसको लग रहा है ही इज़ एट रेस्ट. सो अगर हम दो को पैसेंजर्स लेंगे ए एंड बी, अकॉर्डिंग टू बी ए इज़ एट रेस्ट एंड अकॉर्डिंग टू ए बी इज़ एट रेस्ट, बट अकॉर्डिंग टू द सी हु इज स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म both are in motion. So that is the frame of reference कि आपकी surroundings कैसी हैं, आपकी फिक्स पोजीशन है या नहीं है. इट डिपेंड्स अपॉन द सराउंडिंग. सो द फिक्स पॉइंट और द प्लेस विद रिस्पेक्ट टू विच द पोजीशन ऑफ अ बॉडी और ऑब्जेक्ट इज कंपेयर्ड इज कॉल्ड रेफरेंस पॉइंट. फॉर एग्जाम्पल हम ये डॉट लेते हैं, दिस इज एट रेस्ट, ओके, अकॉर्डिंग टू यू, अकॉर्डिंग टू मी. बट अगर कोई स्पेस सैटेलाइट होगी तो वो देखेगी ऊपर से अर्थ इज मूविंग अलॉन्ग विद दिस डॉट इज ऑल्सो मूविंग. सो दैट इज द फ्रेम ऑफ रेफरेंस. सो आप जब भी मोशन की बात करेंगे या रेस्ट की बात करेंगे, यू हैव टू सी द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यानी अकॉर्डिंग किसके साथ आप कंपेयर कर रहे हैं, उसकी सराउंडिंग कैसी है. ओके, देन we'll move on to the introduction of our lesson, which is motion. So motion is defined as the change of position of an object with time with respect to its surroundings. So change of position of an object जो भी time के साथ change करेगा with respect to its position with respect to its surroundings. Similarly, an object is at rest when the position of the object does not change with time with respect to its surrounding. तो अगर कोई मूव कर रहा है, अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग, दैट बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन. और रेस्ट में कौन सी होंगी, जो बिल्कुल भी अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहे विद रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग. फॉर एग्जाम्पल, a moving train is in motion because its position changes with time. Now consider a person, जो भी अभी मैंने बोला. Now consider a person sitting in the train. For someone standing on the platform, the person sitting in the train is in motion. But for the co-passenger, the person is at rest, as the position of the person does not change with time. Hence, we need to consider the surrounding or the frame of reference, as I said, or the point of observation while describing the state of motion of an object. The surroundings is called reference frame. Okay, so this is about motion. Then the types of motion. See, आपको ये है तो नहीं एग्जाम में, but you should know that motion can be broadly classified into three main categories. The first is translatory motion, second is rotational motion, and the third is periodic motion. See, translatory motion is the motion of particles in a straight line. तो जो भी motion straight line में, अगर जैसे कोई गाड़ी चल रही है और कोई एप्पल ट्री से गिर रहा है, that is translatory motion. Motion along a straight line is known as translatory motion. For example, a bus traveling on a straight road and an apple falling from a tree are examples of this kind of motion. The second type of motion is rotational motion. So it refers to the motion of a body around a fixed axis. यानी कि अगर कोई rotate कर रहा है, जैसे earth rotates, okay? One is revolution, another is rotation. इन दो चीज़ों का फ़र्क हमेशा पता होना चाहिए. Rotation मतलब अगर आप किसी के इर्द गिर्द घूमते हो, that is known as rotation. And revolution is known as कि अगर आप अपनी ही axis पे, जैसे आप earth अपनी axis पे घूमती है, that is known as revolution. So rotation refers to the motion of a body around a fixed axis. यानी कि एक fixed axis है, उसके around ये revolve कर रही है. कोई भी, जैसे circular motion है हमारे पास, या हमारे पास spinning tops होते हैं, या a bead moving into a circular track, or Earth's rotation around the sun are the examples of rotational motions. Then
is periodic motion. Periodic motion refers to the motion that is repeated in a regular interval of time. An oscillating spring and the motion of a planet around the sun illustrate this type of motion. For example, अगर आपने कभी pendulum देखा होगा, it moves to and fro, and that motion is known as, this type of motion, to and fro motion, is known as periodic motion. Then coming to what is rest. See, if a body is said to be at rest, if it does not change its position with respect to its surroundings. अगर वो अपनी position change नहीं कर रही है with respect to the surrounding, then the body is said to be at rest. For example, the passengers sitting in a moving bus are said to be at rest with respect to the driver of the same bus because their position do not change with respect to the driver. So you have to here highlight with respect to its surroundings, because everything in motion is with respect to its surroundings, whether it be at motion or be at rest. So that is the about rest. Then here we come to linear motion. See, today is only the introductory topic of motion, and this is linear motion, motion along a straight line. See, they are running along a straight line. The word linear means straight and the motion means change in position with respect to the frame of reference. So a body moving in a straight line with respect to the frame of reference is said to be in linear motion. अगर कोई straight line में दौड़ रहा है, अपनी position change कर रहा है but straight line है, तो that is known as linear motion. An example of this is the motion of an ant or on a straight wire. अगर आप देखो straight wire पे अगर ants चलेंगे बहुत सारे, it's along the straight line, then it's said to be in linear motion. So points to remember in linear motion. In linear motion, the object must move in a straight line. The motion of the object along the straight line may not be uniform. So हम uniform and non-uniform motion के बारे में आगे पढ़ेंगे, तो हमें पता चलेगा कि जो linear motion है, it may not be uniform. So ये हम बाद में पढ़ेंगे. Now describing motion. So what is motion? I'm repeating this. Motion is a change in position of a body with time. So motion can be described in terms of distance, mood or the displacement. अब what is distance and what is displacement? और इनमें क्या difference है distance और displacement में? Then we'll talk about it tomorrow. Okay? Thank you. Have a nice day.